things. Okay, vacancies and all, you can, that is not important for me. For me, important section is the scheme of examination. There will be 3 phases. Okay, there will be 3 phases: preliminary, mains, and interview. In the preliminary section, there will be 150 questions. Last time the paper was pen paper examination, and this time this is online. That is the main change. There will be 150 questions, and out of which they have clearly mentioned that general English will be 15 marks, verbal and non-verbal reasoning 30 marks, quantitative aptitude 30 marks, general knowledge current affairs 30 marks, general science 30 marks, and IP legislation in India WIPO and related treaties has 15 marks. So out of this 150 questions, 10% question is dedicated to the IPR section. Okay, and there is a saying in the chemistry that the slowest step is the rate determining step, chemical kinetics chapter. That means if you do not study this section properly, IPR part, that can harm your final result also. So you should study this IPR section very clearly. Is it clear or not? And rest of the other section is of CGL pattern, not UPSC pattern. I am saying it very clearly. Rest of the other portion is of CGL pattern, not UPSC pattern. So don't get confused with UPSC. You do not study something like UPSC syllabus. Once a minute, huh? It will disturb again and again. So let me fix this. Okay. So there will be 150 questions, and 10% question is dedicated to IPR part. 10% question is dedicated to IPR part. Okay. And there is a minimum qualifying criteria. Minimum qualifying criteria means you have to get that minimum marks so that you can be considered for further further consideration for the list. That minimum qualifying marks is for UR is 30%, OBC EWA is 25%, and others is 20%. That means out of 150 marks, you must have to get 45 marks. If you are getting less than 45, you will be really omitted out of the examination hall. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then they have clearly mentioned that if the vacancy is 100, then the number of qualifying candidates for mains will be 20 times. That means 2000. Okay, that means in the physics section, there are overall कितना सिर्फ 14 ना physics में 14 शायद UR का है. In the physics part, taking as an example, in the physics part there are 14 seats, 30 seats. Sorry, 30 seats. So total 600 candidates will be called for mains part. 600 candidates will be called for mains part. Okay. Okay, now comes to the mains paper. The paper has 2 papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 is OMR based, paper 2 is descriptive answer writing. What is paper 1? Paper 1 is as similar as the prelims part, but there are some changes. General knowledge and current affairs is 20 marks, aptitude 20 marks, elementary mathematics. What is elementary mathematics? Elementary mathematics का मतलब होता है 10 plus up to 10 plus 2 mathematics. Is it clear or not? Elementary mathematics means up to 10 plus 2 mathematics. That means you have that knowledge of 10 plus 2 level mathematics. Someone has joined late. That means you must have that knowledge of 10 plus 2 level mathematics, up to 10 plus 2 level. Okay, up to 10 plus 2 level. CBSE सिलेबस, हाँ, उससे ज्यादा नहीं. उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी
basically in the English proficiency, if there is mentioned that English language proficiency, that means there are synonym, antonym, that means vocabulary, but synonym, antonym, phrasal verb, um, uh, passage. So there are that those part are called English proficiency part. There can be close test also. That means CGL mains का जो section होता है, CGL mains का English का उस level का हो सकता है. And then comes the part knowledge related to IPR, intellectual property rights, IPR, which has 20 marks. Okay, 20 marks means 20% of that examination. 20%. So it is not a matter of joke. If the section is 20%, it can create huge difference in the final markings. So 20% is a huge mark. Okay. And there paper 2, that is subject paper of 300 marks, 3 hours time duration. So you have to prepare your subject, and your subject has some interesting thing. I will discuss it after some time. Please wait. Now पेपर 1 एंड पेपर 2, समझो पेपर 2 में 100 है, पेपर 3 में 300 है, दोनों में 400 मार्क्स है. देयर आर 400 मार्क्स इन टोटल. आउट ऑफ 400 मार्क्स योर स्कोर इज 200. आउट ऑफ 400 मार्क्स योर स्कोर इज 200. ओके, आउट ऑफ द 200 मार्क्स, out of that 200 marks you will be getting 160 marks as the weightage in the final calculation or the final merit calculation. Out of 200 marks you will be getting 160 marks 160 marks as the final weightage. Now the rest part, that is the 20% part, is rested for the interview section, which has 100 marks. Which has 100 marks. Suppose anyone is getting 80 out of 100. Anyone is getting 80 out of 100. Then 20% का मतलब क्या होता है? 16. So he will be considered as only 16. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Is it clear or not? Yes, sir. कैसा मार्क्स कैलकुलेशन होगा, समझ में आया? हाँ सर. So you must have clear vision, okay, how the examination is going on, because until unless you have clear vision, doubts will be continuously occurring in your mind. And then the syllabus has interesting thing. I am taking a syllabus as an example and let you understand what is the main interesting part of this syllabus. Okay. Let me take physics. Let me take physics because my subject is physics, so I can clearly explain from that. In the physics syllabus, there are 2 parts. Mathematical methods, classical mechanics, electromagnetic theory, quantum mechanics, thermodynamics, statistical physics, electronics and experimental methods. Up to this section. That means 1, 2, 3, 4, 5 and 6. First 6 chapters are from BSc part. The first 6 chapters. And the next six chapters, 6 or 6 chapters is there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, there are 8, 9. There are 9 chapters. The rest 9 chapters are from actually little advanced. That means from MSc, BSc and MSc. You can say that because nuclear physics part, condensed physics part, atomic molecular physics, but some topics are from BSc and some topics are from MSc. So it is a combined part. So those who are from physics background or those who are from chemistry background, that means the general paper part,
not the technical paper, those students have to study both BSc and MSc. Is it clear or not? Is it clear or not? Say yes or no. Yes, sir. Yes. But for the BTech students, those who are from BTech background, they have to study their BTech part also only. Those who are from BTech student, the BTech section, that means they are these BTech students, they have to study the BTech part only. Okay, it is clear. क्लियर है सबको और ये नहीं है? हाँ सर. So this is the scheme of the syllabus. This is the scheme of the syllabus, and I am repeating this for the new joinees in the group because those they haven't joined in the last session of discussion. That's why I gave a very brief introduction, very brief, because in the in Wednesday I discussed it in very details. Okay, but today I am making it short. In the group I have provided IPR notes and I have already mentioned कौन सा part तुमको पढ़ना है, कौन सा part तुमको नहीं पढ़ना है. Clearly mention which part you have to read and which part you have not to read. So keep that in mind. Take a copy and pen. Whenever you are studying, at first note that down and then read, because that helps to memorize. Okay, this is a memorizing technique. This is a memorizing technique. If you do not writing it down, you cannot remember it. Okay, it is very tough to remember. If you are not writing it down, it is very hard to remember. Is it clear? Yes, sir. Any questions from here? Any questions from here? No question, everything is clear. Very good. Now, is there any student from technical background? टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? माने इंजीनियरिंग साइंस से कोई है बीटेक पार्ट से? ओके ओके, those who are from BTech part, please study the books I have provided in the group, and if you have personal notes and all, you can go through that. Okay, those will help to prepare the subject part. It is not possible to prepare the mains and prelims separately, because after prelims you will not get sufficient times for mains preparation. You are up to, within 6 months you will be in jobs. Within 6 months they will complete the process within December. So you have completed you have to complete, they will complete the process within December. So within 6 months you will have your job. They have clearly mentioned the dates, and it is an officer rank examination equivalent to IAS. Same salary, same package, everything same. The difference is the resignation, nothing else. So it is a very golden opportunity for you all. Okay. Any question? कोई सवाल है मन के अंदर? कुछ पूछना है? कुछ नहीं है मन के? No sir, अभी तो नहीं है. Okay. Okay, you do not have any questions. Okay, how many of you have studied IPR part? अगर IPR नहीं पढ़ोगे तो बाद में मत बोलना कि सर IPR नहीं पढ़ा. IPR पढ़ना ही पड़ेगा. You have to study IPR. You have to study IPR, okay?
I think you all can see the screen, okay? So this is the IPR notes. These are the IPR notes. So in the IPR note, okay, you do not have all the things. This is a very vital PDF, okay? Very vital PDF because इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट इन इंडिया, यहाँ पे कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्ट कैसे कैसे आया है, उन सब के बारे में एक ब्रीफली डिस्कशन में, बस 9 पेज का एक पीडीएफ है. दिस इज वेरी स्मॉल पीडीएफ ऑफ 9 पेजेस. ऑल द लॉज आर मेंशन्ड, ओके. স্যার আইপিআর নোটস সেন্ড করবেন. হ্যাঁ, আইপিআর নোটস গুলো সেন্ড করবেন, ওগুলো পাইনি, গ্রুপে পরে জয়েন হয়েছি তো. ঠিক আছে, we will talk in later, okay. So out of all the notes, some laws are very important. तो बेला है join करो. Some notes are very important. One of the note is the Patents Act 1970, very vital for the examination. Patents Act 1970. Okay, Patents Act, very important. Patents Act 1970. You have to remember the dates very clearly. The dates very clearly. Look, the law came into force at April 20, 1972, but enacted at September 19, 1970. That means the date of enaction and the date of coming into force are not same. This kind of minor details you should notice, because if you miss this kind of notice, the answer can be wrong. Okay, the answer can be wrong. This is a very vital note, very vital. इस नोट को पढ़े हो कोई? Has anyone read this note? Yes, Anyone? पढ़े हो? Very good. कौन बोला पढ़ा है? Shefali. Okay, Shefali, explain Indian Patents Act 1970. What you have understood? हिंदी में बोल सकती हो. सर 1970 में इनएक्टेड हुआ था. बस 1970 में इनेक्टेड हुआ था. में कब इनेक्टेड हुआ था, अगर हुआ भी तो? तुम बोली ना, तुम पढ़ी हो, बोलो. When you are studying, you should have clear vision what you are studying. समझ में आया सबको? When you are studying, you must have the clear vision of the study. In the note I have already mentioned. Let me share the screen once again. In the note I have clearly said that the law enacted at September 19, 1970 and came into force at April 20, 1972. It is clearly written in the note. It is clearly written, very clearly. So you should remember the date, okay, and the subject matter. What is the subject matter? Enforcement of IP and related laws, IP regulatory body and patents. IP regulatory body and patents. Can anyone explain what is patent? Can anyone of you explain what is patent? कोई बोल सकता है पेटेंट क्या होता है? बोलो. कोई पढ़ा नहीं अभी तक मैंने. It is very disheartening because I have sent this note very long time ago, so you should have studied. पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इन सबको पढ़ना चाहिए. ओके, जीआई टैगिंग क्या होता है, ये सब कुछ you should have those knowledge. You are appearing as a patent officer. You are not some clerk. You are not a clerk. You are officer. So officers should have the attitude of an officer. Okay.
This note is very vital. So you all have to study this note very in details. हाँ, बहुत सिंपल तरीके से चार करके सर ने नोट बनाया है, जिन सर ने इसको पीडीएफ को बनाया था, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बनाया है. थोड़ा पढ़ोगे तो समझ जाओगे. ठीक है, दिस वन इज वेरी वाइटल. नाउ नेक्स्ट, this is a very important book. हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है प्राइमर फॉर एकेडेमिया. प्राइमर का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी नोट या फिर एक इंट्रोडक्शन. ठीक है, प्राइमर शब्द का मतलब होता है. तो दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल बुक. 284 पेज तुमको नहीं पढ़ना है. मैं क्लियरली, आई एम मेंशनिंग इट क्लियरली, यू डू नॉट हैव टू रीड 284 पेजेस. यू हैव टू रीड सम चैप्टर्स. Chapter 1, that is introduction to intellectual property. क्या होता है intellectual property? What is intellectual property? इसके बारे में यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से कहा गया है. In a very simple manners, it is explained in this book. Okay, introduction to intellectual property. Point number 1. Point number 2, कैटेगोरी को नहीं पढ़ना है. यहाँ पे कैटेगोरी को पढ़ने का जरूरत नहीं है, चैप्टर 2 पढ़ने का जरूरत नहीं है. ठीक है, बस थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ लेना. पेटेंटिंग क्या माने, पेटेंटिंग क्या होता है, व्हाट इज पेटेंटिंग, पेटेंटिंग के बारे में इन डिटेल्स यहाँ पे है. थोड़ा एक ब्रीफ, बस टर्म्स का मतलब क्या होता है यही पढ़ना है तुमको. व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द टर्म. ओके, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द टर्म. कॉपीराइट, पेटेंटिंग, ट्रेडमार्क, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द टर्म. इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस. ओके, बस उन सब का क्या पढ़ना है यहाँ पे, जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है बस उसको पढ़ना है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ओके, प्लीज वेट. चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WPO. WPO की हेड ऑफिस कहाँ पे? व्हाट इज द हेड ऑफिस ऑफ WPO? जिनेवा, स्विट्जरलैंड. वेरी गुड, जेनेवा में है. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO का हेड ऑफिस है जेनेवा में. तो WIPO के बारे में यहाँ पे बहुत ही क्लियर डिटेल्स है. डिटेल्ड, वेरी क्लियर डिटेल्स अबाउट द WIPO इज मेंशन हियर विद इन 10 पेजेस. ज्यादा पेज भी नहीं है, देखो 131 से 141. इट्स वेरी स्मॉल चैप्टर. ओके, उसके बाद ट्रीटीज और कन्वेंशंस एग्रीमेंट, जो पहले हम लोग के प्रीलिम्स के सिलेबस में है. आईपीआर रिलेटेड ट्रीटीज में तुमको you do not have to read in details about the treaties. Okay, you do not have to read in details about the treaties. I am mentioning it again and again. Only the treaty, the year, किन किन के बीच में हुआ और उसका वक्तव्य क्या था, बस. Name of the treaty, where the treaty has been signed, who has signed the treaty, and what is the subject matter. बस एक कॉपी बनाओ, फ्लो चार्ट में एक चार्ट बना के कॉपी में रख दो, जिंदगी में काम में आएगा. बिकॉज दिस विल हेल्प इन इंटरव्यू ऑल्सो. इंटरव्यू में सवाल तो पूछेगा, क्वेश्चन दे विल आस्क डिफरेंटली क्वेश्चंस फ्रॉम आईपीआर. इट्स अ 100 मार्क्स इंटरव्यू, नॉट a matter of joke. So they will definitely ask questions from IPR. Okay. Then IP organizations in India. India में क्या क्या IP organizations हैं? तो you should remember the names and where they are situated. You should remember the names and where they are situated. ये सब नहीं पढ़ना है बीच में 6, 7, 8 ये सब नहीं पढ़ना है. And there is a summary. Chapter 9 is the summary. जो summary किस किस के ऊपर है? पेटेंट, कॉपीराइट रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशंस, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड नॉलेज, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड प्लांट ब्रीडर्स राइट, एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. It's a summary, gist. What we have studied, there is a gist. Very few pages.
and last there is the abolition of abbreviations. So let me come to the abbreviation first so that you can understand it easily. In the abbreviation part, there are acronyms. You should remember the acronyms. There are acronyms. List abbreviations में there are acronyms. You have to remember the acronyms. Okay. You have to remember the acronyms. ज्यादा एक्रोनिम नहीं है. कितना है? 150 एक्रोनिम है. So you have to remember the acronyms. Very important for the examination. Very, very important, huh? Very, very important. I am telling it again and again. Very, very important. Look, यहाँ पे बहुत चीज छोटे तरीके से दिया गया है. नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी वो क्या होता है? बायोडायवर्सिटी एक्ट क्या है? ट्रीटीज, कन्वेंशन, एग्रीमेंट्स. बस यही तो चाहिए एग्जाम के लिए, और क्या चाहिए? दिस इज चैप्टर 9. ओके, दिस इज चैप्टर 9. So very small informations are given in a very lucid manner. So you have to study this book. Though, and please note down which chapters I am mentioning. Okay. Please note down which chapters I am mentioning and what I am saying. You have to study this section. Okay. You have to study this section. अगर समझ लो कि तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बुक से, if you are not understanding anything from the book, just read 2 things. What are those 2 things? Chapter 9 and the abbreviations. Okay, chapter 9 and the abbreviation, so that you can get some marks. Okay. Someone has raised hand. कौन उठाया हाथ? On the truth, इससे कौन है ना यार, नाम बोलो. On the truth itself कौन है? हेलो, हाथ उठाया ना, बोलो कौन हो, क्या सवाल है, बोलो. ओके. यहां तक जो डिस्कशन हुआ, द डिस्कशन आई हैव डन टिल नाउ, एनीथिंग टू आस्क? कुछ है सब दिमाग में है? एनीथिंग टू आस्क? समथिंग इन योर माइंड? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? कुछ नहीं है. बाप रे, तुम जो बहुत मैंने आइंस्टाइन की दिमाग वाले हो सबके सब. बहुत बढ़िया. So I think you all have understood what you have to read from this book. Okay. Let's come to the another point. Okay. Classification of goods एंड सर्विसेज. गुड और सर्विसेज क्या होता है उसके बारे में एक क्लासिफिकेशन है. ये आईपीआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. व्हाट इज गुड एंड व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट आर सर्विसेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द डेफिनेशन एंड देयर कैटेगरीज. दैट मीन्स गुड क्या होता है, गुड किसको हम गुड्स बोलेंगे, और व्हिच प्रॉपर्टीज शुड दैट मटेरियल हैव सो दैट इट कैन बी कंसीडर्ड एज गुड्स. ओके. उसके बाद क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन में मैं पहले आई एम क्लियरली सेइंग दैट लिसन वेरी केयरफुली. इन द क्लासिफिकेशन पार्ट देयर आर 34 क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स and 9 classifications of services. You just have to read the headings. क्लास 1 में क्या पढ़ता है, बस इतना ही. देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, गुड्स क्लास 1 includes mainly chemical products used in industry, science and agriculture, including those
which go to the market of products belonging to the other classes. Just this one. क्या क्या हो सकता है उसमें? Chemicals used in science, industry, photography, agriculture, horticulture, forestry. That means the chemical components. Simple भाषा में the chemical components. Chemical components come under the class 1 of the goods. Is it clear? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या पढ़ना है यहां से? यस सर। पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा नहीं है ना, उसका जो जीस्ट है, उसका अंदर का जो क्या बोले उसको, निर्जाश है, उसको पढ़ना है। पूरा का पूरा पढ़ के याद नहीं रखा जा सकता। एग्जामिनेशन नया टाइप का है, तुम लोगों के लिए फैमिलियर थिंग नहीं है, सो जितना है उन सबका जीस्ट तुमको प्रिपेयर करना है घर में। समझ में आया? वैसे इस बस हेडिंग्स कॉपी में हेडिंग्स लिख के याद रखो क्या क्या चीज था, थोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा। ओके, ये गया, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये पढ़ने का इतना डिटेल्स में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग में पढ़ोगे। ये भी नहीं लगेगा। अच्छा, इंडियन भी एग्रीमेंट थोड़ा पढ़ सकते हो। आईपीओ ऑफिस और डब्ल्यूआईपीओ के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको थोड़ा पढ़ सकते हो। ओके, कब से फोर्स हुआ है? जनवरी 1, 2018 से फोर्स हुआ है ये एग्रीमेंट। उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स है, इसमें पढ़ सकते हो। 8 पेजेस है, ठीक है, 8 पेजेस है। बस उसको थोड़ा एक बार सब्जेक्ट मैटर वगैरह जो है, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, कौन सा आर्टिकल्स है, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, बस वो पढ़ लेना। समझ में आया? समझ में आया? ज्यादा पेज नहीं, 8 पेज है बस। गिव इट रीडिंग ना, रीडिंग देने में क्या है, समझ लो स्टोरी बुक पढ़ रहे हो। मैं जानता हूं बोरिंग चीजें हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। When you will be an officer and you do not have that clear idea, clear vision of the things you are going to deals with, so that can create problem na. So you must have that idea. That means, look, terms and expressions. Article 1, terms and expressions. Treaty क्या होता है? What is treaty? What is regulations? Administrative instruction क्या होता है? Article क्या है? Rule क्या है? Contracting state क्या है? Authority क्या है? और इंटरनेशनल ब्यूरो क्या होता है? बस उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप दिया गया है। यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस बेसिक थिंग्स बस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके ओके, बाकी मैनुअल है, लेकिन अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है मैनुअल वगैरह। नौकरी के टाइम तुमको पढ़ना भी पड़ेगा, मैनुअल पढ़ने का जरूरत। जहां तक बोला मैंने, जो टॉपिक बोला बस। अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक अलग से इसको भेज दे रहा हूं ग्रुप में। जो 3 पीडीएफ मैंने बोला उसको अलग से मैं भेज देता हूं। ये 4 पीडीएफ है, छोटा 4 पीडीएफ है बस। इतना पढ़ने से तुम्हारा हो जाएगा। You all have very doubt that how will we deal with such kind of youth things. So I have selected the 4 PDFs and sent that in the group. अभी हो पाएगा? Can you all prepare now? Yes, sir. Yes, sir. This was the IBR part. In the general part is of CGL part, and I have provided necessary materials for the CGL examination in the group. I think you all have seen them. रोज तो कोई ना कोई ज्वाइन कर, तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता वैसे। His or her responsibility to collect. CGL के लिए मैंने क्या बोला था? CGL का जो सेक्शन है, that means the general aptitude part,
what I had said earlier? For the क्या क्या होता है? जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, उसके बाद नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इन तीन पार्ट को कहा जाता है जनरल एप्टीट्यूड। इसका स्टैंडर्ड क्या है? एसएससी सीजीएल है। स्टैंडर्ड क्या है? एसएससी सीजीएल है। तो कैसे प्रिपेयर करें इस पार्ट को? तरीका होता है मॉक, है ना? बेसिक स्टडी मटेरियल, नंबर पेशेंस। उसके हमको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड बुक चाहिए। आई विल रिकमेंड नीतू सिंह का बुक है प्लीज टू पैरामाउंट। ओके, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसके साथ क्या पढ़ोगे? क्या चाहिए तुमको? ब्लैक बुक चाहिए। बहुत अच्छा बुक है ब्लैक बुक। हाँ, तो इन सबसे जनरल इंग्लिश, सॉरी क्यों लिख दिया गलती से जनरल इंग्लिश हो जाएगा। कौन इसके लिए क्या करें? राकेश यादव। राकेश यादव करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे? किरण करेंगे। अगर किरण का अवेलेबल है तो किरण करेंगे। कौन एप्टीट्यूड होगी? दिया है ग्रुप में करना। क्वांटम कैट ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइडेड। क्वांटम कैट, क्वांटम बिल्ली, सॉडिंजर्स कैट। ओके, सॉडिंजर्स कैट, सर्वेश कुमार वर्मा। और पॉपुलर बुक है। कैट के लिए भी बहुत अच्छा है। कैट मीन्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एमबी के लिए जो होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। उसी के साथ किसके लिए अच्छा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीजी के लिए बहुत अच्छा बुक है। ओके, फिर क्या रहा हम लोगों का? कॉन्टेक्चुअल हो गया, ये हो गया रीजनिंग। रीजनिंग के लिए सेम राकेश यादव प्लस किरण। अगर किरण का नहीं मिल रहा है तो उसके बदले में तो पिनाकल कर सकते हो, ग्रुप में दिया गया है पिनाकल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या रहा? जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस के लिए हम कौन सा बुक करेंगे? ब्लैक बुक करेंगे। ब्लैक बुक का एक बुक है जनरल अवेयरनेस के ऊपर। और साथ में क्या कर सकते हैं हम? जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ सकते हैं। सॉरी, मेरे पास लाइट पेन नहीं है ना, तो उंगली से लिखना पड़ता है तो थोड़ा स्लिप हो जाता है। लूसेंट कर सकते हैं या फिर मनोहर पांडे कर सकते हैं। मनोहर पांडे, ओके, लूसेंट या फिर मनोहर पांडे कर सकते हैं। ये अभी तक मैंने बुक्स के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए कौन सा करेंगे? करंट अफेयर्स के लिए कौन सा करेंगे? क्या फॉलो करेंगे? अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड तुम्हारे पास नहीं है, तुम जीके टुडे कर सकते हो या फिर कोई भी स्टैंडर्ड, इन स्टैंडर्ड सीए बुक, मैगजीन, इन स्टैंडर्ड सीए मैगजीन का तरीका, इन स्टैंडर्ड सीए मैगजीन। ओके, इन स्टैंडर्ड सीए मैगजीन। अगर समझ लो
वो भी नहीं है, तुम चाहो मैंने तुम्हारे पास ऑनलाइन वो भी अवेलेबल नहीं है, तो ऑफलाइन में तुम चाहो तो प्रतियोगिता दर्पण कर सकते हो। बहुत अच्छा बुक है, प्रतियोगिता दर्पण कर सकते हो। ठीक है, तो उससे करंट अफेयर्स कवर कर जाएगा। तो हो गया 4 पार्ट। अभी आते हैं मॉक के ऊपर। मॉक्स, तो मॉक्स देने के लिए मैं अड्डा 24/7 को बहुत रिकमेंड करता हूं हमेशा। इसका कारण है, इसका कारण क्या है, डेली मॉक्स होता है वहां पे, डेली मॉक्स विच इज फ्री, एंड डेली मॉक्स are sectional mocks. These are sectional mocks, sectional and topic wise mocks, topic wise mocks. You will get the same thing, you will get the same thing in textbook also, you will get the same thing in textbook also. Okay, अगर तुम CGL का मॉक दोगे, CGL mocks, that will help in this kind of examination. CGL mocks will help, CGL mocks will help. समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कुछ भी? कोई ऐसा भाग्यवान है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया? एवरीथिंग क्लियर और नॉट से? अरे रिप्लाई तो दो। यस सर, हेलो, क्लियर। यस सर। तो ये करने से हमारा स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन हो जाएगा। और जो IPR का पार्ट बचा, उसके लिए 57 क्वेश्चंस मैंने दिया है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड, जिसको तुमको प्रिपेयर करना है। और उसके साथ आई विल प्रोवाइड लेटर। बेस्ट है, नोट्स पढ़ो, कीप स्टडिंग नोट्स। और जो लोग फिजिक्स के बच्चे हैं यहाँ पे, फिजिक्स के लिए ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड सफिशिएंट नोट्स, सब्जेक्ट बेस्ड notes plus books have been provided. बस यही करने से हो जाएगा, बस यही करने से हो जाएगा। ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, जितना बड़ा लग रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इट इज डिपेंड्स ऑन योर पेशेंस। तुम लोग पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते, उसके ऊपर डिपेंडेबल है। अभी पूछो, कुछ पूछ रहा है? फ्रॉम द नेक्स्ट मीटिंग जब होगा, IPR का एक एक चैप्टर तुमको रेडी करना है। मैं एक एक नोट से सवाल पूछूंगा, ऑडियो में आकर सवाल का जवाब देना है। हाँ, 20 সেকেন্ডের পরে 20 সেকেন্ডের পরে কেন? স্যার 22 এক্সাম আছে। IBJIO হ্যাঁ IBJIO পড়াশোনা করছিস? হ্যাঁ স্যার করছি। সাবজেক্ট প্রিপারেশন হয়েছে? কিছুটা বলতে পারেন, মানে ওই যে কতটা ডেপথে Get- পড়তে হবে না পড়তে হবে ওটা তো বোঝা যাচ্ছে না। get বলে যাচ্ছি তো আমি, get। মানে গেটের প্রিভিয়াস ইয়ার করলে হয়ে যাবে। I will suggest that you should prepare up to get. It is safe. It is Up to safe get. passage. Okay. I have a brief, very detailed discussion class on IBGIO in previously. I don't know whether you have actually na. In that class, I have clearly mentioned that for IBGIO, you should have to prepare up to get, not more than that. Okay. That will help because there is a subject-wise paper, so better to prepare up to get. ঠিক আছে।
Any question to ask? Sumona? প্রতিদিন লিখতে হবে কোশ্চেন। At first, you all have 2015 wala question in all the streams. You all have Yes, yes. 2015 wala question. Yes, sir. At first, take a copy, open your books and solve the 2015 question. कुछ पढ़ने से पहले, before starting the your subject paper, just solve the paper, question paper, and write it down in the book. बुक देख के ही लिखो आंसर, लेकिन जितना मार्क्स है उसके ऊपर उसके बेसिस में लिखना है. If you have 10 marks, that doesn't mean that you have to write a history in the copy. एकदम appropriate होना चाहिए. Answer writing is a skill. Okay, answer writing is a skill. Answer writing is a skill. There are 3 parts. First part is called introduction. That means brief idea. Brief idea. Number two, body, subject matter. बॉडी का मतलब होता है subject matter. And the last part is the conclusion. Conclusion. What is conclusion? View. What is the view of the subject? Okay. Suppose there is a question suppose calculate Landry factor. I am given an example. Okay. Calculate Landry factor. My finger is sleeping actually. पैसा भी नहीं है. अगर पैसा होता तो एक आईपैड ले लेता. बहुत प्रॉब्लम होता है लिखने में. Landry factor. Anyone tell me what is the expression of Landry factor? किसको मालूम है? किसको याद है Landry factor का डेफिनेशन क्या होता है? Landry factor Shefali, what is Landry factor? 1 plus j plus 1 minus l plus 1 plus s plus 1 upon 2j plus 1. Very good. Divide by 2 into j plus 1. Absolutely correct. This is Landry factor. तो Landry factor को अगर ये क्वेश्चन आया, suppose there is a 10 marks question. Suppose this is a 10 marks question. So how will you write? What is the introduction part? Define. There's a definition of Landry factor. Number 2, calculation. Number 3, utility. कहाँ पे यूज होता है? किसमें यूज होता है Landry factor? स्पेशल क्वांटाइजेशन. किसमें यूज होता है? स्पेशल क्वांटाइजेशन. अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होता फिजिक्स पढ़ा देता मैं, लेकिन मेरे पास वो सिस्टम ही नहीं है कि मैं फिजिक्स पढ़ा पाऊं, ना ही उतना टाइम है जिंदगी में. The workload nowadays in Indian Railways is extremely high, both physical and mental. अगर तुम्हारे पास दिमाग की शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो इतना टाइम एक सब्जेक्ट के पीछे देना बहुत मुश्किल है. जो प्रॉब्लम मेरा हो गया है यहाँ पे आके. सोचा था रेलवे में नौकरी है तो थोड़ा शांति होगा, मन में कुछ नहीं है, सब तबाह हो गया नौकरी में आने के बाद. स्पेशल क्वांटाइजेशन. तो यू कैन गिव एन एग्जांपल. सपोज G3/2 कैसे कैलकुलेट होगा, लाइक दैट. मालूम है तो स्पेशल क्वांटाइजेशन क्या होता है? हाँ, 3/2 के लिए क्या होगा? सॉरी,
थ्री बाई टू के लिए क्या होता है, माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू, क्या होता है मैग्नेटिक, माइनस थ्री बाई टू माइनस हाफ, उसके बाद क्या होता है, बीच में कुछ होता है, नहीं हाँ होता सर। है, प्लस वन करके बनता है, डायरेक्ट हाफ और थ्री बाई टू, राइट। यस सर। याद याद है तो, बीच वाला नहीं होता है। तो डेन के ऐसा ड्राइंग है तो ऐसा मत बना देना। स्पेशल क्वांटाइजेशन में थोड़ा रफ एक ड्राइंग किया यहाँ पे, ड्राइंग से याद आया, ड्राइंग डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम जहां जहां पॉसिबल है डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, flow chart is very important. You should know how to write flow chart. Okay, suppose you have given a question, given elementary idea about the elementary particles. Elementary particles का चार्ट है ना, elementary particles का चार्ट है तो क्वार्क माने इलेक्ट्रॉन हेड्रॉन है ना, हाइपरॉन चार्ट है ना, एक तो बहुत बड़ा, तो चार्ट Yes, लिख sir. देना विद एग्जांपल्स, हो गया, चार्ट विद एग्जांपल्स हो गया, फ्लो चार्ट। So this enhances your marks, nothing else. If you write in a very conventional manner, out of 10 you will get 6. If you get write a conventional manner and a correct answer, conventional, you will get 8 to 7.5 to 8 marks. 7.5 to 8 marks out of 10 if the process is intellectual. समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ये जो एक मार्क्स है ना, ये दिस 1 marks will create havoc difference in future. Difference of 1.5 to 2 in one question, there will be 30 questions, तो 30 into 1.5 मैं लिस्ट ही पकड़ रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 एंड 2 into 30 कितना हो जाएगा, 2 into 30 कितना हो जाएगा 60। समझ पा रहे हो क्या डिफरेंस हो सकता है, मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके बोल रहा हूं। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर आंसर राइटिंग इज वेरी मच क्रिस्पीनेस होना चाहिए, केएफसी का चिकन बकेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, द आंसर राइटिंग शुड बी लाइक केएफसी चिकन बकेट। IBC format is important. When you are writing an answer in IBC format, the answer writing is very much skillful and you will get very good marks. घुसा दिमाग के अंदर क्या बोला मैंने? यस सर। कोई सवाल है? अब सब तो भाग ही गए ग्रुप से, किसी के पास पेशेंस ही नहीं है, क्लास करने का भी पेशेंस नहीं है किसी के पास। तुम लोग क्या एग्जाम में क्वालिफाई करोगे? कोई एक टीचर जो कोई पैसा नहीं लेता तुम लोगों से, फ्री में सर्विस दे रहा है, एक क्लास करा रहा है अपना टाइम वेस्ट करके, तुम लोगों में इतना पेशेंस नहीं है। मैं तुम लोगों में जो लोग हैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूं, एज ए होल बोल रहा हूं, एक पेशेंस नहीं है कि 2 घंटा बैठ सके। ये सिचुएशन है। हाँ স্যার বলছিলাম যে কিছু কোয়েশ্চেন এরকম থাকে যেগুলো 10 মার্কস করে আসছে দেখছিলাম, কিন্তু সেখানে মানে জাস্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আনসার হয়, তো সেক্ষেত্রে মানে स्ट्रेट কিভাবে फॉरवर्ड, स्ट्रेट কোয়েশ্চেন फॉरवर्ड जस्मिन देशे जदाचार, যেমন কোশ্চেন তেমন উত্তর। Suppose you have been asked a problem in the examination hall out of 10 marks, तो तुम क्या डिराइवेशन करके प्रॉब्लम करोगे क्या गधे की तरह? क्या करोगे वहां पे? बस if a problem has been asked, let me show you a technique. If a problem has been asked, in case of problems, क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप, राइटिंग डाउन फॉर्मूला, राइटिंग डाउन फॉर्मूला प्लस एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? टर्म्स को एक्सप्लेन करो, बस टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे लैंडेज फैक्टर वाला जो क्वेश्चन था,
उसमें जीजे क्या है ऐसे लिखना है, जीजे इस लैंड जी फैक्टर, लैंड जी फैक्टर, लैंड जी जीजे, मैं उतना लिखने का मन नहीं कर रहा है एक्चुअली। लैंड जी फैक्टर है जीजे। जे क्या है, जे क्या होता है बोलो, व्हाट इज जे? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर टोटल मोमेंटम। टोटल फिर एल, एल इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एस, ऑर्बिटल, हाँ, एस स्पिन और स्पिन स्पिन ऑर्बिटल स्पिन मोमेंटम। ऑर्बिटल। तो एक्सप्लेन करो बस, उसके बाद डू द कैलकुलेशन। स्टेप 2 कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करो। और स्टेप 3 आंसर को बॉक्स मार्क करो। और यहां पे इफ पॉसिबल गिवन एग्जांपल, अगर नहीं है तो नहीं है। अगर समझ लो ये स्टेप तुम कर पाओगे 10 मार्क्स से 10 में से 8 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन समझ लो तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, तो 6 आउट ऑफ 10 दे देगा। डिफरेंस क्या हो गया, 2 मार्क्स। याद रखना 2 इंटू 30 का मतलब होता है 60। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। यस सर। और एग्जाम में एक चीज तुमको याद रखना है, ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर, कुछ तो मार्क्स मिलेगा। लास्ट ईयर इन द मेंस पेपर, मेंस केमिस्ट्री पेपर 2018 में कट ऑफ था 93 आउट ऑफ 300। समझ पा रहे हो, दिस वाज कट ऑफ। किस कैटेगरी का, यूआर कैटेगरी का। 93 आउट ऑफ 300 वाज कट ऑफ। समझ पा रहे हो? यस सर। What can be the maximum marks? What can be the maximum marks? Maximum marks can be not more than 70%. This can be 210 max. So let us consider that anyone has got 210 marks. Let us consider that anyone has got 210 marks. The precision 93 to 210. उतना उस समय गया नहीं था, मैं बोल रहा हूं at that time that इतना नहीं गया था। Maximum marks was around suppose 60%. So this was 180. This was 180. So their cutoff was like this, 290, 110, 180. So precision is 90. समझ में आ रहा है क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है क्या क्या हो सकता है? घुसा सबके दिमाग के अंदर या नहीं घुसा? हाँ सर। So you have to very much aware that you must complete the examination paper. कुछ भी लिख के आओ, लेकिन लिख के आओ। You will get some marks. Suppose you know the definition, but you do not know the calculation, but you know the formula. उसके बाद क्या करना है तुमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैंने चेंज करना है, क्या कुछ करना है, समझ में नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? उतना ही लिख के आओ। नेवर फॉरगेट टू राइट डाउन यूनिट। यूनिट लिखना अगर भूल गए एग्जाम में तो वहीं पे तुम्हारा 1 मार्क्स काट देगा। अगर टीचर थोड़ा टिपिकल टाइप टीचर हो, काट के 0 भी कह सकता है। इतना दिमाग में रहे, नेवर फॉरगेट टू राइट डाउन यूनिट्स। ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, whether it is technical background, whether it is non-technical background, science is same in all inertial frame, because every science is either physics or stamp collecting, as per Ernest Rutherford, who was himself a chemist. तो लॉजिक सेम ही रहता है सबका, दिस इज द लॉजिकल पार्ट। सो इस प्रोसेस को अगर फॉलो कर पाए तो डेफिनेटली एग्जाम अच्छा होगा। अच्छा, दोज हु आर फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड,
आई हैव सेंड सम असाइनमेंट। किसी भी एक ने स्टार्ट किया है असाइनमेंट घर में? नोबडी। না স্যার। তোর তুই কেন করবি? তুই ফিজিক্স অ্যাসাইনমেন্ট কেন করতে যাবি? ফিজিক্স I ব্যাকগ্রাউন্ডে। have sent some assignments on physics. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমি তো ফিজিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডেরই। ফিজিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি পাঠিয়েছিলেন, আপনার সঙ্গে কথা হলো সেদিন তখন। ও তোর ফিজিক্স না, ফিজিক্স হ্যাঁ গুলো ফিজিক্স করবি, অ্যাসাইনমেন্ট করেছিস? হ্যাঁ স্যার, স্টার্ট। ছোটখাটো কোশ্চেন গুলো প্রথমে, কিন্তু বাকি যেগুলো ডেসক্রিপটিভ আছে কিছু কিছু সেগুলো করা হয়নি, কারণ তার মধ্যে অ্যাড দিল সিটি অ্যালটমেন্ট হলো আইপিজিও। quantum mechanics I have, जो the assignment I have sent on quantum mechanics ना, হুম पूरा quantum mechanics का प्रिपरेशन ही वो पेपर कर देगा, क्वेश्चन पेपर। थर्मोडायनेमिक्स का जो असाइनमेंट दिया है, अगर तुम वो करोगे बीएससी लेवल का टोटल थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है सर, 6 दिन है अभी। during my BSc teaching, that means when I was teaching BSc physics honors in Calcutta, at that time I had taken 36 tests, 36 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर लेकर 36 एग्जाम लिया था मैंने। जो लड़का वो 36 एग्जाम दिया वो IIT एग्जाम में 202 रैंक करके IIT मद्रास से पास आउट हुआ है एमएससी में, अभी पीएचडी कर रहा है। समझ रहे हो असाइनमेंट सॉल्व करने का फायदा? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, बाद में मत बोलना कि सर आपने, सर नहीं हुआ, ये हुआ, उसका कोई मतलब नहीं बनता एक्चुअली। इज इट क्लियर? यस फॉर द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, फॉर द इंजीनियर, कोई है इंजीनियरिंग का अभी? नहीं कि सब निकल गया ग्रुप से? इज देयर एनीवन फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? कोई नहीं है इंजीनियरिंग का? बहुत बढ़िया। फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैक, फॉर द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड students, what you have to do, you have to solve the gauge questions in details. Suppose you are doing a problem on operational amplifier, suppose write it down in details na. Suppose you have given a problem on differential amplifier, so write down what is differential amplifier, then solve the problem, write down the answer, बस यही तो करना है। From the next class, you have to read one PDF completely and I will ask questions randomly. जो नहीं दे पाएगा वो कान पकड़ के उठक बैठक करेगा। समझ में आया? जो সুমনা বোঝা যাচ্ছে কি বললাম আমি? দুই সুমনা, মজুমদার আর কি কুন্ডু, দুজনেই উপস্থিত। বুঝছিস? কুন্ডুকে জিজ্ঞেস করলাম, কিরে কুন্ডু বুঝছিস কি বললাম? তারপরে কি বললাম? না পার। হ্যাঁ হ্যাঁ, अभिरामी A, come on the audio. Come on the audio. Hello? You are asking something, please come on the audio. Abhinami A. Oh, that is not so important. That is not so important. Okay. What is your mother tongue? What is your mother tongue? Oh, Malayalam, I don't know that much. If you had been Telugu, then I can speak a little bit Telugu. Okay, you understand Hindi, good. So there are 3 persons from Kerala right now in the group, good. So बस यही था मेरा आज का डिस्कशन। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास मैं डेट बोल दूंगा,
तुम सबको क्या करना है, you have to prepare one single PDF and I will ask questions from that. Is it clear? Yes, sir. यस सर। So next class will be on next week. मैं एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। आज कितना है, 15 तारीख। ओहो, अच्छा সমরূপ না হয় পরেরটা জয়েন করবে, ওর তো আইবি জেআইও আছে। হ্যাঁ স্যার, অনেকেরই আছে গ্রুপে মনে হয়। আচ্ছা আমি গ্রুপে দেখছি কয়জনের আছে। আচ্ছা স্যার। ओके ठीक है, let the IBGIO happen, then I will give you a time. Okay, let the IBGIO happen because there are many students who are applying for IBGIO examination. It's a very good examination. Pay scale is good, so many students have applied. So let them complete IBGIO. Otherwise, they will be deprived. Okay. So I think everyone is very clear how to study, what to study, how to do the right answer writing practice. फिर भी किसी के मन में सवाल है? सर आईबीजेए के लिए कोई सजेशन आपका? आईबीजेआईयू के लिए बस जो सिलेबस तो एक्चुअली नहीं है आईबीजेआईयू का। अच्छा मुझे एक बार बोलना, एक्चुअली मैं भूल गया, बहुत दिन हो गया तो। अच्छा आईबीजेआईयू का प्रीलिम्स में सब्जेक्ट पेपर है ना, एक जनरल पेपर है, एक सब्जेक्ट पेपर है, राइट? हाँ सर, 100 क्वेश्चन, हाँ 25 जनरल, 75 सब्जेक्ट। ओके, and general aptitude, research aptitude, quantitative aptitude and 75 marks physics. फिजिक्स में एज पर द सब्जेक्ट, सो 75 मार्क्स जो है उसके लिए नॉट मोर देन बीएससी, हाँ, बिकॉज दैट इज ए लेवल 6 जॉब। फॉर लेवल 6 जॉब यू डू नॉट हैव टू स्टडी मोर देन बीएससी, ठीक है? For level 6 job, you do not have to read more than BSc. The general aptitude part is like CGL part. तो इज अ कॉमन पार्ट, उस पेपर में इस पेपर में वो कॉमन पार्ट है, बस क्वेश्चन का संख्या में अंतर है और कुछ नहीं। ओके, आर यू ऑन द IBGIO ग्रुप विवेक? No sir. अच्छा, I had a group more or মানে 100-200 জনের মতো মানে আছে স্টুডেন্ট এই গ্রুপটাতে। I think there are 100 students in that group, approximately, मुझे याद नहीं आ रहा है। And I had provided enough materials in that group. क्या पढ़ना है, डिफरेंस मटेरियल सब कुछ जितना मेरे पास था मैंने दिया है। अगर कोई पढ़ेगा तो डिफरेंटली क्वालिफाई कर सकता है, अगर कोई पढ़ेगा तो, दैट इज अ क्वेश्चन। तो ठीक है, चलो आज के लिए शुभ रात्रि। और आफ्टर IBGIO एग्जामिनेशन, completion of IBGIO examination, I will start this kind of sessions on different chapter. Okay, I will mention the PDF, the chapter, and you will study. समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. So all the very best for IBGIO also, and थैंक यू सर। just remember one thing: the brave is always triumphant. If you are brave, you will succeed. The brave is always triumphant, and you are going. If you are applying for this examination, you are going to be officers, and you should have that officer kind of mentality, that kind of attitude, and that kind of patience, that kind of क्या बोले उसको, that kind of bravery. Because if you are not brave, you cannot be officer. नौकरी छोड़ना पड़ देता है बीच में प्रेशर से। So if you are going to be officer, you should be brave. You should be brave. I think I am clear right now to every one of you. यस। Yes sir. Okay, जो नया ज्वाइनीस है, those who are new joinees, please attend the sessions. Okay, एक चीज बार बार दोहराना ना टाइम का वेस्टेज भी होता है, और क्या होता है ना कि मैं 2 दिन समझो, एक दिन कराया, आज करा दिया, इसके बाद मैं नहीं करूंगा सेम चीज का रिपीटेशन। बार बार एक चीज तो नहीं बोल सकता ना,
इसके बाद से डायरेक्टली क्लासेस होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलो, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, एनीथिंग टू आस्क, you can call me, WhatsApp me, no issues. Okay? রেকর্ড করেছিস? আমার তো অডিও রেকর্ডিং। Yes, you can upload that. ওকে, পাঠাস। আচ্ছা, তুই ইউটিউবে আপলোড করে দে না, তাহলেই তো হলো। টেকনোলজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ, গুড টার্মিনোলজি। আরে আমার একদম স্পেস নেই, নাহলে আমি করে দিতাম আমার ইউটিউব চ্যানেলটায়। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। ओके, सो टाटा बाय बाय, सब पढ़ाई करो, ठीक है? फिर भी मैं